Hello everyone, welcome to RBI Aspirant. Today we are going to discuss one finance descriptive answer writing for the upcoming RBI Grade B examination. The question which I have chosen is based on the corporate governance in banks. So let's see the question. Examine the key challenges and RBI's regulatory approach towards improving corporate governance in the Indian banking sector. How can resilient and independent board strengthen governance in the banking sector? So, this question has three key objectives that we have to answer. The first is key challenges, second, RBI's regulatory approach, and the third is how can resilient and independent board strengthen governance. So, let's see how we are going to proceed with the answer. First of all, the very basic framework is we have to write intro, body, and conclusion in any answer that we are attempting. First, let's go through what we are going to write in the intro of this question. So, here we can see the key objective in corporate governance. So, intro, we should start with writing about corporate governance. We can write the definition of the corporate governance and a little brief about the importance of corporate governance, why it is important, why is the RBI is focusing so much on improving corporate governance and everything, and some general or connecting sentences that we say. Now, the body part. Body is the main part of the answer. So, first thing that we have to mention is challenges. So, let's see what are the challenges in Indian banking sector about corporate governance. So, first of all, let's see how we are going to identify the challenges. Here, we are going to use stakeholder approach. What is a stakeholder approach? Stakeholder approach is a technique that we use to generate dimensions for any topic in the answer writing. So let's what is a stakeholder? Stakeholders are something like if we are talking about corporate governance, so who all are responsible for corporate governance in any organization? Who all are responsible and who all are affected by the corporate governance? So if we can see here, we can get broadly there are three sectors. First is the organization itself. In organization, there are two things. First, the organization structure, and the second, the people who are working in the organization. And the third is regulators. Okay, so here we can generate the dimension for the regulators if we have RBI. The regulators of the Indian banking system is RBI. So here we can see like RBI से related क्या जाता है guidelines. RBI guidelines generate करती है corporate governance के ऊपर. So, the first is lack of proper rules and guidelines. There are no proper rules established or dictated about the corporate governance and how they should proceed with the corporate governance, what are the important key pointers, what are the protection policies. Nothing is properly documented. So, the first thing is lack of proper rules and guidelines. ये हमारे दिमाग में क्लिक किया थ्रू RBI एज ए स्टेक होल्डर. सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्टेक होल्डर, वहाँ से वी कैन गेट दैट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, दे डू नॉट लाइक ट्रांसफर, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, दे डू नॉट टेल द पब्लिक ओपनली अबाउट इट. सो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अनदर चैलेंज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में आता है. Second, another aspect about the organizational structure is technology and cyber security. Because as we all know that as the time is coming, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, जिस वजह से टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. सो अनदर थिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आउटडेटेड है, दे आर नॉट अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा से बढ़ जाता है एंड वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए चैलेंज जनरेट हो जाता है. So that is another. Now, if we talk about the people who are working in the organization, they are another stakeholder. वहाँ से हमें मिल जाता है no whistleblower protection. What is whistleblower? Whistleblower is someone जो अगर कोई भी fraud हो रहा है organization में, तो उसको जो भी रिपोर्ट करता है whether to the higher level or in the organization or to the media or to the regulators, उनको whistleblower कहते हैं. So in the organization there is no, like in Indian banking system or in general in our India, there is no whistleblower protection policy. मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स मिलते हैं, उनको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, जिस वजह से people are very reluctant
टू आइडेंटिफाई एनी फ्रॉड्स दैट आर हैपनिंग। तो इस वजह से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इफ द फ्रॉड इज हैपनिंग एंड नो वन इज रिपोर्टिंग इट, सो द फ्रॉड इज गोइंग टू हैपन एंड दैट it will never stop. So that's why this is also a challenge. And the fourth point is short term gain over long term interest. People in the organization, whether they are directors or board member, they sometimes focus on short term gain over long term interest. इस वजह से they start to breach the corporate governance policies, and this creates a challenge for implementing the corporate governance. So yeah, these is the 5 key points जो हमारा पहला पॉइंटर, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है. नाउ सेकंड, मूविंग टू द आरबीआईज रेगुलेटरी अप्रोच. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट आरबीआई की क्या क्या रेगुलेटरी अप्रोच अभी तक आई हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम में. So now see, this is something that you have to know beforehand. You cannot generate real examples there. वहाँ पर you have to study about it. So what I did, because I had a little clue but I was not fully aware about this कि RBI की क्या क्या regulatory measures हैं. So I went on Google, I went on YouTube, I used ChatGPT to identify कि अभी मतलब recent टाइम में currently RBI ने क्या क्या steps लिए हैं इसके लिए, and we can generate some general pointers too. So let me just show you what I did here. सबसे पहले, this is something that I found on Google, revised guidelines on corporate governance 2021. आरबीआई ने 2021 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए पूरी रिवाइज गाइडलाइंस जनरेट की थी. तो उसके बारे में वी कैन राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो वी कैन राइट कि आरबीआई ने ये स्टेप लिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. सेकेंड, दिस इज समथिंग जो हम स्टैटिक पार्ट से उठा सकते हैं कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर द बोर्ड. This means the board member should have certain qualifications or certain specialization that makes them fit for the board. So this is certain criteria that they have to meet for being the board members in any organization. So this is also something that RBI published. Now third is ensuring independence of director. So as I found that currently there are not very much pointers that RBI has done about it. So this is something that I picked up from the static part. Ensuring independence of the board. RBI has always published criteria for the independence of board of director so that to implement corporate governance effectively. इसमें वी कैन राइट जो भी क्राइटेरियाज हैं दैट 1/3 एनईडी होनी चाहिए एंड देन उसमें से 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए. दिस इज एग्जाम्पल. इस तरह के क्राइटेरियाज वी कैन राइट अबाउट इट. नाउ फोर्थ, रिस्क असेसमेंट एंड सुपरविजन. मतलब आरबीआई ने ये टाइम टू टाइम आरबीआई करता ही रहता है. वी डोंट हैव टू मेंशन कि अभी किया है या कब किया है. ये टाइम टू टाइम आरबीआई पब्लिश करता रहता है कि रिस्क असेसमेंट कैसा होना चाहिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम में. देन आरबीआई सुपरवाइजरी गाइडलाइंस भी पब्लिश करता रहता है, टाइम टू टाइम सुपरविजन करता है ऑन साइट ऑफ साइट. तो इस तरह के होते हैं. तो दिस इज वी कैन मेंशन. रिस्क असेसमेंट में आ जाता है कि दे हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, दे हैव टू वर्क ऑन इट एंड दे हैव टू डू स्ट्रेस टेस्टिंग एंड एवरीथिंग. सो दैट इज वी कैन मेंशन हियर. नाउ फिफ्थ हमारा आ जाता है रेमेडियल मेजर्स. रेमेडियल मेजर्स में हमारा आ जाएगा, इट्स लाइक दैट इफ द फ्रॉड हैज़ हैपेंड, द ब्रीच हैज़ हैपेंड ऑफ द रूल, तो उसके बाद क्या स्टेप्स हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कवर द लॉसेज, हाउ वी आर गोइंग टू पनिश द पर्सन इन्वॉल्व. सो ये सब रेमेडियल मेजर्स भी आरबीआई ने पब्लिश कर रखे हैं. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो अभी आए हैं करंटली या फिर किसी टाइम पे आए हैं दैट दे आर गोइंग. ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं. सो वी जस्ट हैव टू राइट जनरल अबाउट इट कि आरबीआई ने रेमेडियल मेजर्स बता के रखे हैं. Okay, so this we answered the second part of the question. Now moving to the third part, that was how can resilient and independent board strengthen governance in the banking sector. Let's see. So yeah, here I have generated 5 points. सबसे पहले क्या हो, अब देखो सबसे पहले जान लो कि इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है. इंडिपेंडेंस में आ जाता है कि दैट डायरेक्टर्स हु डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है. दे आर न्यूट्रल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब देखो ये मतलब हाउ, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर इंडिपेंडेंट एंड रेसिलियंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा. सो लेट्स सी, इससे क्या होगा. सबसे पहले देखो मैंने जो चैलेंजेस थे मैंने उन्हीं से यहाँ पर टॉपिक बनाया. तो फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी. सो हियर दैट एज दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, तो दे विल मोटिवेट द डायरेक्टर्स और द बोर्ड मेंबर्स टू बी
ट्रांसपेरेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। एंड देन वो मोटिवेट करेंगे कि पब्लिक को भी आप ट्रांसपेरेंट ही बताइए सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी नोन टू द पब्लिक। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड आ जाता है मैनेजिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके, देर आर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो when there is a resilient and independent board, they will manage the interest of all the stakeholders. They will not only focus about their interest, they will not only focus about employees, but all the stakeholders who are engaged in the organization. So that is something that will help in improving the corporate governance. Now third is forming a culture of integrity and compliance. दिस इज़ अ वेरी जेनरिक थिंग, और इसके बारे में कोई भी लिख सकता है कि हाँ अगर इन बोर्ड हमारा इंडिपेंडेंट है, रेजिलियंट है टुवर्ड्स एनी रिस्क अपकमिंग, तो एक कल्चर इंटीग्रेट होता है वहाँ पर कि इंटीग्रिटी होती है एंड स्ट्रॉन्ग होता है बोर्ड, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस क्रिएट होता है कि रेगुलेटर्स के जो भी गाइडलाइंस है उससे हम कंप्लायंस करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ द फोर्थ इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में आ जाता है कि अगर हमारा रेसिलियंट बोर्ड है, सो दे विल प्रैक्टिस स्ट्रेस टेस्टिंग, और जितने भी रिस्क असेसमेंट के टूल्स हैं दे विल प्रैक्टिस इट, दे विल अडॉप्ट इन एंड दे विल इंश्योर कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स एनी द रिस्क दैट इज अपकमिंग, वो रेजिलियंट रहे, वो उस रिस्क को फेस कर सके। तो इस वजह से रिस्क असेसमेंट भी जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड द फिफ्थ थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन। ये जनरली आप मतलब कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं कि हाँ अगर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एज वेल एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प होती है। सो यस, these all the three topics we answered about the question. एंड लास्ट में वी हैव टू राइट कंक्लूजन। मैंने ये हमेशा कहा है, वी कैन नेवर मिस कंक्लूजन, मतलब हम बॉडी पार्ट लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, वी हैव टू राइट कंक्लूजन। कंक्लूजन में यू कैन आइदर समराइज, जो भी आपने लिखा उसको सब समराइज कर दो तीन लाइन में, और यू कैन राइट अ वे फॉरवर्ड एज वेल, so that is according to you. So yes, these was the question for today, and I hope I helped you in any way. See you in next video. Till then, bye bye, take care.